I am Roshan Kumar of Math Teacher Modern English School, Kunti Nagar branch, Nevada. Students, today I am going to discuss second exercise of factorization of polynomial, chapter 3. Second exercise, factorization the difference of two squares. Factorization the difference of two squares. दो स्क्वायर्स के डिफरेंस का फैक्टराइजेशन. फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इन दिस एक्सरसाइज टोटल क्वेश्चंस को हम लोग जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे. ऐसे लाने के लिए कुछ ऐड करना हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी हम अपने करेंगे. और इस फॉर्म में लाने के बाद हमारे पास आसानी हो जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लाने के लिए. तो इस एक्सरसाइज में जो मेन फार्मूला है वो यही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. Different examples of this exercise. So first example is x square minus y square by 100. First of all we write x का whole square minus y by 10 का whole square, because y square और 10 का square equal to 100. So this form is a square minus b square, and a square minus b square equal to a plus b into a minus b. So we write a plus b into a minus b, a plus b into a minus b. And the second example, 2a to the power 5 minus 32a. First of all, students, this is not in the form of a square minus b square. So first of all, 2a is common. 2a is common in both terms. So a to the power, rest is a to the power 4 minus 16. 16 to the 32a, and 2a a to the power 4 we write a square का whole square minus 4 का square. So 2a square minus 4, a square plus 4 into a square minus 4. For this implies 2a square plus 4 a square minus 4, it means a square minus 2 का whole square. It means a square minus 2 का square. So we write 2a square plus 4 into a square minus b square, a plus b into a minus b. Next examples, factorize x square minus 1 minus 2a minus a square. First of all, we convert into a square minus b square. So here x square and 1 minus 2a or minus a square. So x square and this terms minus is common. Minus is common, so 1 plus 2a plus a square. So x square minus a square plus 1 का square plus we write 2 into a into 1, 2a. So a square plus b square plus 2ab. So we write x square minus a square plus b square plus 2ab, a plus b का whole square. So we write a square minus b square, students, a plus b into a minus b. And the next examples, 1 plus 2ab minus a square plus b square. So first of all 1 plus 2ab and remove bracket minus a square minus b square. This implies in these terms minus is common. Minus 2ab
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हियर स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए in the form a square minus b square. So it is so easy, 1 minus a plus b into 1 minus a 1 plus a minus b. Student, next example, factorize x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 1. This is not in the form of a square minus b square. So first of all, we convert in the form of a square minus b square. So here x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 plus 1 2 minus 1, 2 minus 1 equal to 1. So x square का whole square we write plus 1 by x square का whole square plus 2 into a x square into b minus 1, a square plus b square plus 2ab, a plus b का whole square minus 1 का whole square. Now students, this converts a square minus b square. So we write a plus b into a minus b, and here x square plus 1 by x square plus 1 in the form of this form. So we write x square plus 1 by x square plus 2 minus 1, 2 minus 1 equal to 1, and this same minus 1. Here students, a square plus b square plus 2ab. So x square plus 1 by x का whole square plus 2 into x into 1 by x minus 1, and this is x square plus 1 by x square minus 1. So a square plus b square plus 2ab, this is cancelled, 2 is a square plus b square plus 2ab, a plus b का whole square, x plus 1 by x का whole square minus 1, and rest is x square plus 1 by x square minus 1. So a square minus b square, so x plus 1 by x minus 1, x plus 1 by x plus 1, and x square plus 1 by x square minus 1. Next question of students, x to the power 8 minus y to the power 8 factorize. So first of all, we convert into a square minus b square. So we write x to the power 4 का whole square. We know that x to the power m का whole power n equal to x to the power m multiply n. So 4 to the 8. So minus y to the power 4 का whole square. A square minus b square. A plus b into a minus b. So x to the power 4 plus y to the power 4, and x to the power 4 minus y to the power 4. Here x to the power 4 plus y to the power 4 plus 2x square y square minus 2x square y square plus 2x square minus y square is cancelled. So rest is x to the power 4 plus y to the power 4, y to the power 4, and here x square का whole square minus y square का whole square. Here x square का whole square plus y square का whole square plus 2x square y square minus 2x square y square. Here a square minus b square. So x square plus y square and x square minus y square. Here student, a square plus b square plus 2ab, a plus b का whole square minus 2x square y square.
and x square plus y square and x square minus y square. We write x square plus y square का whole square and 2x square by square, 2 को लिखे √2 का whole square, so minus √2 xy का whole square. We write √2 xy का whole square and x square plus y square and x square minus y square. We factorize x plus y into x minus y. So x plus y into x minus y. Here a square minus b square. We write x square plus y square plus √2 xy into x square plus y square minus √2 xy and x square plus y square into x plus y into x minus y.